So the resolution professional collates all the outstanding claims from the classes of the creditors against the corporate debtors and incorporates it in the resolution plan. So having witnessed so many IBCs or so many acquisitions happening via the IBC route, can you please throw some light? We discussed the role of Insolvency and Bankruptcy Code 2016 vis-a-vis power sector. How can you? So we were earlier we were discussing कि growth दो तरह से हो सकती है. One is inorganic growth and second is organic growth. Organic growth में land, labor, capital employ करके naturally with time the organization or the power company grows. There was another method of growth of the power company which was inorganic growth. One of the ways of inorganic growth was through Insolvency and Bankruptcy Code route, IBC route, which we call. IBC route ka bhi, the entire system of IBC route for the growth we discussed in the last session. The final question which Shraddha is asking is, ki by resolution plan, when we have to submit a resolution plan, what are the best practices which we should employ while submitting or while drafting the resolution plan? So these are what we call, I call them take care. So what all things we have to take care while drafting a resolution plan for acquiring a company through Insolvency and Bankruptcy Code route. So first thing which we have to take care, and this is also a best practice, we have to be clear once we file a resolution plan through which method or mode we will control that entity, a company. So option one can be, it can be amalgamated with the parent company. So your company can amalgamate the target company with the company. The advantage is that under section 72A of the Income Tax Act, there are tax benefits. So the company is going through an insolvency proceedings. That means there is a lot of issues with the company, financial issues. And if you want the tax benefits, then the amalgamation route is one of the good routes. That is option one. Option two is you make it a subsidiary company or a special purpose vehicle. So do not, amalgamate the company with you. Let it be as it is, and you can be a holding company, and that can be a subsidiary company or a special purpose vehicle for that special purpose actually. Option three, or you can go ahead and also get the name of the company changed and the directors changed. So under section 13 of the Companies Act, you can change the name of the company with your company's name, and you can change the directors of the company to fully own and acquire. So these are the three options which I am suggesting, but there are other options also. You can take a decision as to how you want to take charge of the company or how you would like to control the company, and that should be incorporated in your resolution plan. That is take care number one. Second is you have to take care of employees. So in case a private company is acquiring a power company, in that case, you are allowed to do cherry picking. So you can, in the target companies, you have to identify which are the employees who are key players in the target company and do cherry picking. अब ये cherry picking में आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि whatever is the contractual arrangement with other employees, fulfill those contractual arrangement as a first priority. Second, if you are a PSU, so we have done a lot of acquisition for PSUs through Insolvency and Bankruptcy Code IBC route. In that case, it is challenging actually, because what will happen if a private entity is being acquired by a public sector undertaking? In that case, that means the private employees will become employees of public sector undertaking, and public sector undertaking के पास पहले से ही overstaffing actually. In fact, they are expanding so that their staff members or maybe excess staff can be utilized in this new project or new company. Secondly, there is a principle of equality. So every person in India or citizen of India has to get an opportunity if he wants to join a public sector undertaking to take an appropriate exam and follow procedure. So it is challenging for public sector undertaking to take over all the employees. In this case, your resolution plan should clearly mention
that all the employees of the target company which are being the company which is being acquired, they are all free to apply if there is advertisement for impart. So effectively you have to, if there is, you will be 30 days or 60 days or 90 days after the resolution plan is passed or approved by the committee of creditors and approved by the National Company Law Tribunal. All the employees, we can write in the resolution plan that they are free to, if there is any advertisement from PSU for employment, they are all free to apply. Third, for with respect to employees, you have to take care that pay all the dues as per the employment contract to avoid future litigation. So cost of litigation is costly. So for employees, this is even if employees in a sequence are below the financial creditors. So सबसे पहले हमें financial creditors को पैसे देने पड़ते हैं, employees उसके बाद आते हैं. But आप resolution plan बनाएं तो आप employees के सारे dues दें. This is our advice always. Actually, don't hold or withhold any dues of employees, or don't cut back, because your future litigation will be very more costly than whatever you are paying to the employees. So this is, so I first जो take care मैंने आपको बताया था options amalgamation it should be, अगर वो subsidiary company बनाना है या change of name करना है. दूसरा take care जो मैंने बताया for drafting a resolution plan is employees. Third जो take care है, whatever additional other approvals are required, those approvals should be taken prior to filing a resolution plan. Even if there is what you can do is, so there are other regulatory approvals which are also required. For example, Competition Commission of India. So if a large power sector company is acquiring a large power sector company, there is a threshold, 500 CR से ज्यादा turnover है या फिर 1000 crore से ज्यादा net worth है. In that case, approval of Competition Commission of India is compulsory. So third thing which you have to take care in a resolution plan, first, before filing the resolution plan, file an application before the appropriate commission for approval, and then mention it in the resolution plan that you have filed an application before the Competition Commission of India for prior approval. And let the discussion go on actually, and let it also write it is subject to the approval of the Competition Commission of India. If the approval is not granted, then your resolution plan automatically fails actually. Okay. Second, also under section 17 subsection 4, so Competition Commission of India के section 5 में there is a requirement, if there is any combination when two companies of certain sizes are merging. So two companies of certain sizes in power sector are merging, and power sector companies are very huge companies actually. So maximum, leaving aside few solar companies which are small companies, maximum mergers के case में और acquisition के case में Competition Commission of India का approval जरूरी होता है. Even in case of insolvency and bankruptcy court, it happen to the committee of creditors कि भाई मेरा approval आ गया है CCI से, number 1. लेकिन यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती है. जब मैंने रेगुलेटर्स बोला टेक केयर 3, that is third take care. So रेगुलेटर्स में सिर्फ CCI नहीं आते, रेगुलेटर्स में इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशंस भी आते हैं. So section 17 subsection 3 of the Electricity Act may prior approval of independent regulatory commission is required. So in case it is a licensed, there is a distinct independent regulatory commission का approval नहीं है जरूर. वहां पे आप CCI का approval ले लीजिए competition commission का, आपका काम खत्म हो गया. लेकिन अगर licensed activity, that means transmission, distribution, trading and supply of electricity. So we just rewind. Power sector का मतलब क्या है? 5 things together constitute power sector: generation, transmission, distribution, trading and supply of electricity. Between these 5 things, one activity of the power sector, that is generation of electricity, is a de-licensed activity. And 4 entities of the power sector, that is transmission, distribution, trading and supply of electricity, are licensed activities. In case of, क्योंकि अब आप लोगों को ये सारा बैकग्राउंड अच्छे से पता है, इसलिए आई एम गोइंग फर्दर इन लिटिल कॉम्प्लेक्सिटीज कि
इन चारों का अगर आपका जनरेटिंग कंपनी है तो कंपटीशन और थ्रेशोल्ड आपका ज्यादा है, 500 करोड़ और 1000 करोड़ से ज्यादा है, इन दैट केस कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का अप्रूवल ले लीजिए, आपका काम खत्म। लेकिन अगर आपका बाकी 4 लाइसेंस्ड एक्टिविटी है एक्सेप्ट फॉर जनरेशन, इन दैट केस ट्विन अप्रूवल आर रिक्वायर्ड। सो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का अप्रूवल तो चाहिए, लेकिन सेक्शन 17 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन का भी अप्रूवल चाहिए। So you file the application for approval, and then in the resolution plan also you mention that under section 17(3) that appropriate independent regulatory commission में मैंने application file कर दी। और जब भी वो आए, in between let us assume you have filed your resolution, क्योंकि resolution plan filing करने के लिए time bound activity होती है। You cannot wait ad infinitum for the approval of Competition Commission of India or CERC or SCRC. So you don't wait for it. You mention it in the resolution plan, and simultaneously आप urgent application की hearing, अगर आपको लगे कि डिले हो रहा है इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन में या स्टेट रेगुलेटरी कमीशन डिले कर रही है अप्रूवल देने में, तो आप अर्जेंट हियरिंग की एप्लीकेशन लगा दीजिए। ठीक है, दिस इज अ प्रैक्टिकल रियलिटी आई एम टेलिंग यू। सो थर्ड जो टेक केयर था वो है रेगुलेटरी अप्रूवल्स। जहां भी प्रायर रेगुलेटरी अप्रूवल्स रहते हैं वो आप ले लीजिए, दे आर मैंडेटरी, यू कैन नॉट बाईपास देम एक्चुअली। Okay, so fourth thing which we have to take care while drafting a resolution plan. अब resolution plan में always remember, through this resolution plan you have to protect your directors which will step into the shoes of the directors of the target company. You have to protect your parent company which will take over the target company. And protection is financial also, protection is a criminal also. जो भी जितने लीगल प्रोटेक्शन है वो होने चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रेजोल्यूशन प्लान में हम लोग एक कॉलम बना देते हैं, एग्जेम्पशंस एंड कंसेशंस। सो दोज एग्जेम्पशंस एंड कंसेशंस वी सीक फ्रॉम द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स एंड नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी, जब वो अप्रूव करती है। एग्जेम्पशंस में एक तो नंबर 1 एग्जेम्पशन हम डालते हैं वो है कि फाइनेंशियल क्रेडिटर शुड रिलीज ऑल द चार्जेस आफ्टर द एक्शन ऑफ द कंपनी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इफ यू आर स्टेपिंग, सी व्हेन यू आर डूइंग अ मर्जर एक्विजिशन जो कंपनीज एक्ट में होता है, इस केस में यू आर स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ द न्यू टारगेट कंपनी एंड यू आर एक्वायरिंग ऑल असेट्स प्लस ऑल द लायबिलिटीज। बट आईबीसी रूट में, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी रूट में, अगर आप इंटेलिजेंटली काम करेंगे तो आपको लायबिलिटीज एक्वायर करने की जरूरत नहीं है, एंड दैट इज द होल पर्पस ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। बट इफ यू डोंट राइट इट इन द रेजोल्यूशन प्लान, यू विल एक्वायर द लायबिलिटीज आल्सो। सो मेंशन इट इन द रेजोल्यूशन प्लान दैट I should be given exemption, I should be released from all charges of the financial creditors, all charges of operational creditor. Mention it clearly, number 1. तो आप बोलोगे कि सर लाइबिलिटीज जो फाइनेंशियल क्रेडिटर की लाइबिलिटीज, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स की लाइबिलिटीज तो आपने रिलीज करवा दी by mentioning it in the resolution plan. See, I understand a lot of people maybe जिनको resolution plan, क्योंकि जिन्होंने लास्ट सेशन नहीं अटेंड करा उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। डोंट वरी, आप उसको सिर्फ सुनते जाइए, आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर होता जाएगा। ठीक है, रेजोल्यूशन प्लान एक सिंपल वे में बताता हूँ। रेजोल्यूशन प्लान इज अ डॉक्यूमेंट, जिन्होंने लास्ट सेशन अटेंड नहीं करा है, रेजोल्यूशन प्लान इज अ डॉक्यूमेंट विच वी सबमिट टू कमिटी ऑफ क्रेडिटर। फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को हम डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं अपनी बिड, इट इज लाइक अ बिड विच वी सबमिट टू कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स विच आर ऑल द बैंक्स, एंड उस बिड को वो एग्जामिन करती है। 4, 5, 6 जगह से जो बिड्स आती हैं, जो रेजोल्यूशन प्लान आता है उसको वो एग्जामिन करती है, और जो सबसे ज्यादा पैसे ऑफर करता है या जो सबसे ज्यादा फैसिलिटी और ऑफर करता है उसको दैट कंपनी is handed over to that entity. Very, 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 very crude and very, very simple form of saying what is resolution plan. So today Shraddha was asking the last question, while we are drafting the resolution plan, what all things we should take care. So first I said take care of the options, whether you want to get it into amalgamation or you want to make it a subsidiary company or you just want to change the name and change the directors. So ये option clear होने चाहिए, it should be mentioned in the resolution plan. Second, I said employees. So
If you are a private company, you can do cherry picking of good employees, and rest of the employee, as per the contract, they can be terminated or removed. Third, if you are PSU, then you have to be very careful what you write in the resolution plan, because when you are acquiring as a PSUs, you cannot, there will be a lot of litigation with respect to employees. So you can now not take over employees, because Government of India rules will be applicable for acquiring, onboarding the employees actually. And कई बार CCS rules भी अप्लाई होते हैं. तो इस केस में आपको सिर्फ रेजोल्यूशन प्लान में क्लियरली लिखना होगा कि हम एम्प्लॉइज के सारे टर्मिनल बेनिफिट्स पे करेंगे, पर ये भी लिखना होगा दे आर ऑल फ्री टू अप्लाई इफ एनी वैकेंसी इज एडवर्टाइज. थर्ड जो टेक केयर की बात करी मैंने, वो रेगुलेटरी अप्रूवल की बात करी. रेगुलेटरी अप्रूवल में अप्रूवल फ्रॉम CCI एंड अप्रूवल फ्रॉम इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन. वी आर ऑल्सो वेरी क्लियर क्या मतलब है इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का. इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जब हम लोग बोलते हैं तो तीन चीजें साइमल्टेनियसली की बात करते हैं. सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एंड जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन. दे आर इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन फॉर इंडिया. उनके पावर्स अलग अलग, पावर्स उनके सेम है, फंक्शंस अलग अलग है. ठीक है. अपील सबकी सीधे अपीलेट ट्राइब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में जाती है. फोर्थ, मैंने बताया कि हमेशा कंसेशंस और एक्सेप्शंस रेजोल्यूशन प्लान में मेंशन होनी चाहिए. अब कंसेशन और एक्सेप्शन में फर्स्ट कंसेशन एंड एक्सेप्शन जो मैंने बोला है मांगने के लिए, वो ये मैंने मांगने के लिए बोला है रेजोल्यूशन प्लान में डॉक्यूमेंट करने के लिए कि फाइनेंशियल क्रेडिटर्स शुड रिलीज ऑल द चार्जेस. ओके. सेकेंड, आप बोलोगे कि सर राज सिंह निरंजन जी, आपने जो चार्जेस हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर से वहां से तो रिलीज कर दिया. What about taxes? Before the date of taking over the company, maybe that target company is not paying taxes because obviously it is a stressed asset. So सबसे पहले जो stressed assets में होता है कि वो taxes pay करना बंद कर देते हैं. जो भी जैसा भी चाह रहा हो, टैक्सेस या GST आ रहा हो या इनकम टैक्स आ रहा हो या पुराना सेल्स टैक्स, जब पहले सेल्स टैक्स था फिर उसके पहले वैट था, मे बी उन्होंने पे नहीं करे 5, 10, 20 साल तक. सर्विस टैक्स पहले, GST के पहले, और भी बहुत सारे लोकल टैक्सेस हो सकते हैं. हो सकता है इन्होंने जो लीज डीड में रजिस्टर ही नहीं कराई हो, लीज डीड 4 साल की 5 साल की लीज डीड करा रही हो, रजिस्ट्रेशन एक्ट में आपको लीज डीड रजिस्टर करानी नहीं कराई है, तो वो सारे टैक्सेस, whichever company steps into the shoes, they have to bear all the taxes. अगर आप रेजोल्यूशन प्लान में ये लिख देते कि स्टेट गवर्नमेंट के whatever land revenues, whatever lease and rentals, whatever cess, interest, penalty, damages, we should be exempted. So it is exempted. So write it. Similarly, सेंट्रल गवर्नमेंट एक कॉलम बना के, सेंट्रल जैसे हेडिंग होती है ना, एक कॉलम बना के लिख देते हैं इनकम टैक्स, GST prior to, prior to acquisition should be exempted or concession should be provided. It is done. You will get it actually. And that has been upheld by the Honorable Supreme Court also. But you have to mention it in the resolution plan. Don't forget to mention, because future में वो आपको दिक्कत करेगा. अभी तो कोई दिक्कत नहीं, अभी तो हो जाएगा एक्विजिशन. फिर जितनी आपने कैलकुलेशन करी होगी लाइबिलिटी, उससे ज्यादा लाइबिलिटी आ जाएगी आपके पास. ओके. PSUs के लिए भी एक और इश्यू है. छोटे से थ्रेशोल्ड से बियॉन्ड अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है, सो अलग अलग PSUs को अलग अलग पावर्स है. सो मिनी रत्ना और ये इनको डेजिग्नेशन दिया जाता है इसके हिसाब से कितनी फाइनेंशियल पावर्स है उनके पास. मिनी रत्ना, महारत्ना, सबके अलग अलग फाइनेंशियल पावर है. सो फॉर एग्जांपल, एक PSU की फाइनेंशियल पावर है 500 crores. So that means the board of directors have the power to only invest up to 500 crores, not more than that. अगर 500 crores से plus की investment है for acquisition, in that case approval of public investment board PIB is required. Without approval of government of India public investment board, that investment beyond 5 पैसा हो सकता है PSU के पास है. ठीक है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्टली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन डिसाइड एंड इन्वेस्ट दैट मनी. इफ द थ्रेशोल्ड इज क्रॉस्ड, देन पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड का अप्रूवल इज नेसेसरी.
इन केस यू हैव आपने बिड अपनी सबमिट कर दी या रेजोल्यूशन, जब मैं बिड बोलूं आप रेजोल्यूशन समझ लीजिएगा, रेजोल्यूशन प्लान आपने सबमिट कर दी, उसमें लिख दिया और पब्लिक इन्वेस्टमेंट पीआईबी ने नेगेटिव, देन इट विल बी अ वेरी बिग कि अप्रूवल अप्रूवल जिस तरह से आपने कंपटीशन कमीशन और इसका लिख दिया है, दोनों का, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन का, पीएसयू को स्पेशली ये भी लिखना पड़ेगा कि देयर इज अ डिले इन अप्रूवल and whatever is the public investment board ka approval, we will abide by it. It is like some kind of small condition actually, a special circumstances actually. So mention it in there. Similarly, जो next जो है CTU और STU का बैंक गारंटी एंड अदर डिपॉजिट्स होता है. सो पावर इवैक्यूएशन के लिए जो भी फैसिलिटी है या फिर इंजेक्शन ऑफ पावर इन द ग्रिड है, उसके लिए सीटीयू के साथ और एसटीयू के साथ एग्रीमेंट्स जो होते हैं, ट्रांसमिशन एग्रीमेंट, उसमें बैंक गारंटीज और अदर डिपॉजिट्स हो सकता है. एंड ऑब्वियसली द टारगेट असेट विच यू आर एक्वायरिंग ए टारगेट पावर कंपनी इज स्ट्रेस्ड असेट. सो हो सकता है वो बैंक गारंटी और अदर डिपॉजिट्स सीज हो जाए या फिर एनकैश कर ले. इन द रेजोल्यूशन प्लान राइट इट डाउन कि CTU and STU will not encash the bank guarantees or other deposits. If you write it down, you have an exemption. Okay. So ये जो क्वेश्चन था श्रद्धा का, वो बहुत इंपॉर्टेंट था because this is the practical aspect which has to be taken care of. And generally क्या है, हम लोग ना इसको bid की तरह समझ लेते हैं. It is not a bid document. It is a resolution plan. Resolution plan and bid documents, two different documents. A resolution plan में you have to apply your mind and you have to protect your company's financial interest. You have to protect the, you have to do proper due diligence and protect the interest of the directors from any future criminal liability.